Agrim, you want to say something? Jayesh, you want to say something? No ma'am, nothing extra. अच्छा, रेज किया था हैंड्स इसलिए, अच्छा तुमने लोअर नहीं किया था. ओके ठीक है, कोई समराइज करना चाहेगा लास्ट क्लास में? सो इन दिस वीक आल्सो वी आर गोइंग टू कवर bacterial metabolism is going to be completely the biochemical pathways. And okay, so tell me if you've started with biochemical pathways in the biochemistry class. One of you, can you tell me? गोपिका शुरू कर दिया क्या? जस्कीन, हाँ गोपिका बोलो. कहाँ पहुंचे हो पता तुम लोग नहीं. बताओ. पता नहीं किसको पता है पहले जो कर रहा है. वी स्टार्टेड मेटाबॉलिज्म टुडे. कर रहे थे आज. विशंतन, मेटाबॉलिज्म ही तो बोल रहे हैं. तो उसमें अभी तुम लोग ग्लाइकोलिसिस पे आए आज हो ही या स्टार्ट जनरल कर रहे हैं. मेटाबॉलिज्म पे? अच्छा गुड. आज तो ही स्टार्ट जनरल कर रहे हैं. मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लाइकोलिसिस नहीं शुरू हुई ना अभी? विशंतन तो सिर्फ मैसेज कर पा रहा है. Not yet, ma'am. ओके ठीक है. सो इट सीम्स आई विल फिनिश बिफोर यू ऑल स्टार्ट देयर. ठीक है कोई बात नहीं. जस्ट डिस्कस द रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी. ओ तो तुम लोगों ने डिस्कस किया जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये सर के साथ कि नहीं किया? सत्यगम नहीं किया मैम, मतलब वही मैं सोच रहा था बट फिर नहीं किया. अच्छा ठीक है. विशंतन सेज यस. ओके सो विशंतन बस सर करो, ने अब हम खुद ही नहीं. डिस्कस कर लिया था. अच्छा सर ने कर लिया था तब तुम लोग. ओ ओके, इतना इनपुट तुम लोग को सर से मिल चुका था क्या? चलो ठीक Not है. this much, but some of it. Okay, fine. So one of you has to summarize पहले. I know that this is going to be a little heavy on you, the biochemical pathways, but then I will not be going into the details, like I said, of the enzymes, of the regulation and stuff. For me, it is important to tell you about the metabolic diversity in prokaryotes and how they're able to, like I said, I'm only going to talk about catabolism. So catabolism may, there are three stages I mentioned, and this is how we were going to talk about, or we are going to talk about just stage 2 and 3. So what we right now need is a central molecule, acetyl CoA. जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे थे last class में, what we had seen was sugar or glucose being broken down to pyruvate. Yes, and in respiration, these are the three steps that I mentioned. So what we saw last time was just the breakdown of sugar into 2,3 carbon moieties, and the next step is oxidation to CO2, which will be followed by the third stage, which is the energy generation stage. क्या हम लोग ने glycolysis में energy generation देखा था? Anybody? We studied glycolysis by dividing it into two phases. The first one in which we invest the energy, and the second one, the payoff one. Okay, so energy generation हो रहा था? Yes, ma'am. 2 ATP, right? ATP के दो उन्होंने देखा molecules था बन कि रहे 2, हाँ 2 ATP. लेकिन एक और चीज जो जनरेट हुई थी वो ये थी NADH. Okay, reducing power, and how this also contributes to ATP synthesis is what we're going to cover today. So basically we had covered the first stage. Of course alternatives क्या है हम लोग बाद में बात करेंगे. Breakdown हो चुका था. Now we need to enter into the, or the moiety has to enter into the Krebs cycle or the TCA cycle for oxidation. So the second step is oxidation. But to enter into that, the cell has to, so these are the two steps that I had outlined wherein substrate level phosphorylation was taking place. The next step, of course, for entry into the Krebs cycle, what the cell has to form is a acetyl CoA. तो अगर तुम लोग को pyruvate याद है तो it was a it had a carboxyl group and a keto group. And what happens here is that sequential decarboxylation starts right from this process. So in fact acetyl CoA is kind of a carrier for carbon atoms to the TCA cycle, where the oxidation is going to take, the decarboxylation and oxidation takes place. Now here the enzyme is pyruvate dehydrogenase, which catalyzes the decarboxylation of pyruvate. If you see, this is decarboxylation, and it's a dehydrogenase. So again, NAD plus is getting converted to NADH,
and NADH, D plus is reduced to NADH, and an acetyl group, the acetyl group from pyruvate. So this goes off as CO2, and 2 carbon transferred to coenzyme A, resulting in acetyl-CoA. This is a simple reaction. However, the enzyme is actually a huge complex, pyruvate dehydrogenase. So now that acetyl-CoA is formed, which is also formed from various other starting materials like proteins, like fatty acids, you will have acetyl-CoA as a central molecule. This is what enters into the TCA cycle, या tricarboxylic acid cycle. The other names are Krebs cycle, also citric acid cycle. These are 3 names of this particular cycle. तो अभी तुमने ये step देखा, pyruvic acid 3 carbon, 1 carbon goes off as CO2, and then you have these 2 carbons attached to CoA. In this case, you will see that these 2 carbons are decarboxylated. In this process, you will see they are complete. This is where complete oxidation takes place. Now, the Krebs cycle is also it's an amphibolic pathway. पता नहीं तुमने शायद पढ़ा हो अभी biochemistry में कि amphibolic मतलब this is a pathway which is involved in both generation of energy catabolism, as well as it has steps which are involved in anabolism, or it at least synthesizes certain precursors for biosynthesis. And here, like I said, I'm not going to give you all the details of the enzymes involved and what these substrates are. What I want to bring into your attention is the fact that here this 2 carbon acetyl-CoA, actually these 2 carbons are they condense with a 4 carbon compound, oxaloacetic acid hota hai. It condenses to form a 6 carbon compound, which is a citric acid. So the first condensation product being citric acid, the cycle is called as citric acid cycle as well. This entire cycle, it happens in the cytoplasm in prokaryotes, but in eukaryotes, this is what happens in mitochondrial matrix. In fact, आप powerhouse mitochondria को इसलिए कहते हो क्योंकि ये cycle and also the cycle where ATP is generated happens in the mitochondria. Now, in biochemistry, you will be studying every step and every enzyme involved. यहाँ पे अगर तुम देखो तो 6 carbon is sequentially decarboxylated. 6 carbon, so you have this 5 carbon, and in the other step again, a CO2 is released, and both these are mediated by dehydrogenases. So what results is NADH, CO2 and NADH is synthesized, and again यहाँ पे फिर 4 carbon हो जाएगा, फिर there are a series of reactions and it regenerates oxaloacetic acid so that it can condense with another acetyl-CoA to form the 6 carbon. So this is basically a cycle. इस case में what you have to notice is that there are 3 NADH generated and 1 FADH2 generated. तो हम लोग को ATP generation देखना है और energy generation देखना है. So besides these 2 CO2 which are released, in this process you have 3 NADH and 1 FADH2 released, and there is one step wherein ATP, in fact इस step में ATP नहीं होता है. जितने लोगों ने answers देखा वो Krebs cycle में actually GTP release होता है. GDP gets phosphorylated to form GTP. However, I'm showing you ATP because it's an equivalent. This figure shows you ATP because it's an equivalent. So in this process, complete oxidation has happened and there is release of CO2. Net yield क्या है यहाँ पे? 2 ATP, right? 2 ATP होगा, 2 acetyl-CoA है, 2 pyruvic acid है, अगर तुम्हें last class याद है तो. So 1 glucose, 2 pyruvic acid, 2 acetyl-CoA, and hence 2 ATP plus reducing power in the form of 3 NADH and 1 FADH2. So the overall reaction is this. जहाँ पे acetyl-CoA is getting converted to CO2, complete oxidation हो रहा है, and this is the reducing power which is released. यहाँ पे GTP लिखा हुआ है क्योंकि actually जो energy generate हो रही है, directly जो generate हो रही है वो GTP के form में हो रही है. Okay, so this was the overall reaction of TCA cycle. तुम लोगों ने देखा कि glycolysis में EMP pathway में 2 ATP were released, and here you have 1 GTP being released. Then this is the final stage of respiration, wherein ATP is formed through a series of electron transfer reactions. अगर तुम्हें याद हो उसको हम लोग electron transport chain कहते हैं, ठीक है? So sequentially
initially electrons transfer होते हैं, and this drives the oxidative phosphorylation. So basically phosphorylation हो रहा है लेकिन oxidation reduction involved है. Now in the case of bacteria, they use various kinds of flavins or cytochromes or even non-heme iron components, as well as multiple oxidases for this type of sequential transfer of electron to the final electron acceptor. जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, I'm showing you oxygen here. Now both NADH and FADH2, they donate electrons to the electron transport chain. If you remember, till now NADH and FADH2 has been generated, so they both donate its electrons to the electron transport chain, and the electrons travel through the chain from higher to a lower energy level. Now NADH is a much stronger reducing agent, so it donates right at the start, okay, while FADH2 donates further down the chain, and this has an implication later that you will see in terms of the number of ATP generated. So now in the course of transporting electrons, these transmembrane proteins, they actually serve as pumps for protons. So as electrons are transferred, they pump out protons, okay. Now what this results into is a proton gradient, a proton motive force is generated. So you see, with every transmembrane protein that serves as an electron acceptor and then a donor, as this transfer takes place, protons are pumped out. So once this proton gradient is generated, then the process of, you term it as chemiosmosis, it takes place, which is the flow of electrons, ions basically across the membrane along their gradient. तो अब यहाँ पे H plus high है, so chemiosmosis से H plus actually moves inside. और ये the protein or the critical enzyme here that drives or which leads to the influx is an ion pump ATP synthase. Okay, ATP synthase के बारे में तुम लोगों ने शायद आज पढ़ा हो. अगर तुम लोगों ने आज ATP पढ़ा है तो anybody can you tell me if you know about the mechanism of action of an ATP synthase? One of you, can you tell me? Dhwani, in the biochemistry class? Ma'am, actually, I was unable to attend the class, so I. Anybody else who attended the Ashi? Did you attend the Ma'am, biochemistry? yes, ma'am, I did attend it, but the mechanism of action wasn't discussed in the class. अच्छा ATP के बारे में discussion हुआ था कि why it is energetic. अच्छा ओके ओके ठीक है, मतलब हाई फॉस्फो पी बॉन्ड्स और ये ना. Yes, ma'am. तो इसका एक्चुअली मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है. ये एक मोलेकुलर मोटर है और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर कोर्स. मे बी सर विल टेक यू थ्रू इट इन डिटेल, बट अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू इट एज अ सेल्फ स्टडी थिंग. सो होता क्या है कि विथ दिस इनफ्लक्स the ADP gets phosphorylated to ATP, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा मैकेनिज्म है. अगर तुम लोग कभी टाइम मिले तो देख लेना. Now till now the steps that we had covered did not require oxygen, okay, but here if you notice, when there is oxygen available as the terminal electron acceptor, so this is the final component of the electron transport chain. If oxygen is available, then oxygen serves as the terminal electron acceptor, and this type of a respiration is called as aerobic respiration. जो हम लोग last time respiration aerobic और anaerobic की बात कर रहे थे, so this is aerobic respiration. But if a terminal acceptor is anything other than oxygen, जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे, anaerobic respiration is coming up next. Then it's called as anaerobic respiration. So basically everything else is common till the electron transport chain, and that too is similar in having the similar components. However, the final electron acceptor, if it's oxygen, it's an aerobic respiration. If it's not oxygen, it will be anaerobic respiration. Now this again in eukaryotes is found on the membrane of mitochondria, but in prokaryotes, as you know, it is organelle less. So in prokaryotes, it is the cell membrane which is the site of action for this kind of a process as well. यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि NADH, once it donates its electron, it forms NAD plus. And if you remember from the last class, NAD plus was a requirement in glycolysis and TCA cycle.
So this regeneration holds significance for the running of the former pathways. Okay. If this stops, then the NAD plus will be depleted and the cell will not be able to run glycolysis and TCA cycle. Hence, this kind of a transfer of electron is also important to keep the other pathways running. Okay, so now after having covered these 3 steps, EMP pathway, uske baad Krebs cycle, and then you saw how electrons are being transferred to electron transport chain. These are the steps where you saw ATP being generated. तो ये EMP pathway है जहाँ पे dehydrogenase, जहाँ पे 2 ATP was generated. Then this was 2 CO2 released when pyruvate was converted to acetyl-CoA. उसके बाद Krebs cycle में 4 CO2 were released, 2 plus 2. तो 6 CO2 जो glucose का था, that is completely oxidized. You see 6 CO2 being released. And Krebs cycle में 2 ATP are generated. NADH and FADH2 से 34 ATPs are generated. Okay, and in the next table it will be probably clearer. What is believed is there's a thumb rule that every NADH, when it donates its electron, it leads to the generation of 3 ATP. जब ये आप molecular motor और mechanism पढ़ोगे ATP synthase का, तो फिर तुम्हें clear होगा कि कैसे 1 NADH is believed to result into 3 ATP, generation of 3 ATP, and FADH2 तुमने देखा it releases its electron a little lower in the scale. So 1 FADH is believed to generate 2 ATP. Okay. तो इस कैलकुलेशन से you will have a theoretical yield of 38 ATP. This is considering the direct synthesis of ATP as well as that formed from NADH and FADH2 by the electron transport chain. So a theoretical yield of 38 ATP is observed in the case of aerobic respiration, जो कि सबसे ज़्यादा energy efficient है in all the processes, amongst all the processes that we are going to take up. Lekin this theoretical maximum is not reached. Okay, so generally if you see, the practical number is somewhere around 30 to 32 ATP that are generated in the process of aerobic respiration. But these are the steps, like I outlined. This is where you will find ATP being generated. Now tell me if you have a doubt with aerobic respiration, because then we'll move on to anaerobic respiration. कोई कहीं प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? हम लोग ने ये सारा कवर किया, ये तुम लोगों ने देखा कि ये तीनों मेन स्टेप्स हम लोगों ने कवर किए हैं, राइट? कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है? सो हर स्टेज का एक अपना सिग्निफिकेंस है. द फर्स्ट स्टेज was glucose to pyruvate, then pyruvate to acetyl-CoA, and then release of 2 further CO2s, and final stage was energy generation. This was oxidative phosphorylation, जो हम लोगों ने electron transport chain में देखा था. Now, if there are no further questions, कोई हाथ उठाने वाला है या फिर सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है. We are going to then anaerobic respiration. Ma'am, I have a doubt. Ma'am, what is the reason for getting 32 ATP molecules rather than 38 here? तो जो थंब रूल मैंने तुम्हें बताया ना, ये 3 और 2 ATP वाला, ये हमेशा नहीं स्टैंड करता है. ये जो यहाँ हम तुम्हें कैलकुलेशन बता रहे थे, तो while the ATP वाला जो कैलकुलेशन है वो तो डायरेक्ट है, हाँ, बट लेकिन इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, एग्जैक्टली उतना ही नहीं फॉर्म होता है. ठीक है, सो द नंबर इज लेसर. इट इज नॉट गोइंग टू बी 34 या 24 यहाँ पे. ठीक है, ओके, फाइन. So let's come to anaerobic respiration, and anaerobic respiration करने के बाद हम लोग शायद close कर देंगे फिर. Okay. So anaerobic respiration में तुमने देखा the sequence of events is same. So you have glucose being broken down, then you have the Krebs cycle, and then you have the electron transport chain. However, here the terminal electron, sorry, there should be acceptor, which is other than O2, and this is the reason why there is a lower energy yield compared to aerobic respiration. So if given a choice, a cell, a bacteria, or any prokaryote would prefer to enter into the aerobic respiration mode, and only when oxygen is limiting that a cell decides to enter into anaerobic respiration. Okay. And the different electron acceptors. So the first one is aerobic respiration, wherein O2 is converted to water. You saw O2 से water कैसे electron accept करके हो रहा था. But the other common ones, I've only listed the common ones.
could be nitrates, sulfates, even organic compounds like fumarate and carbon dioxide. And so nitrates are converted to nitrites, ammonia eventually to nitrogen, sulfates to SNH2S, fumarate, as you can see. ये process अगर तुम लोग को पता हो methanogenesis हम लोग, so what we'll do is we'll cover the first process, that is denitrification and methanogenesis, in a little more detail, क्योंकि इसका बहुत रेलेवेंस है इकोसिस्टम में और बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग में. these processes hold a lot of significance. Okay. अब क्यों है कि this is just to give you an example कि aerobic respiration versus anaerobic respiration में सारे steps में, if you see how the theoretical yield is 38 here, but the theoretical yield is only up to a maximum of 36. So 5 से 36 in fact anaerobic respiration में होता है, taking a specific example of these two organisms. And this is because the molecules like sulfates or CO2 or even the process of nitrate reduction, when they are used as electron acceptors, they have a lower reduction potential than oxygen. So less energy is formed per molecule of glucose, depending on which serves as. So if after aerobic respiration, you will see that nitrate reduction is the process which yields the maximum energy. And as you go down in the scale, the energy yield will decrease. So like I said, I'll take up denitrification. So this is anaerobic respiration we're talking of, and because we've considered the common pathways, I'm going to only come to the last step, which is the terminal electron acceptor part. Now denitrification, this is defined as, here you're actually seeing the entire nitrogen cycle, but in bold is the step of denitrification. It is defined as the microbial reduction of nitrate or nitrite coupled to the electron transport phosphorylation, resulting into N2. Okay. Now earlier it was believed that heterotrophs could carry out denitrification only under anoxic conditions, but now we know that even under aerobic conditions denitrification takes place. The only difference between oxic and anoxic is that an anoxic denitrifier, which I will, for an anoxic denitrifier, oxygen is actually detrimental, while in oxic denitrifiers, a process of co-respiration is observed, wherein it could use simultaneously both oxygen and nitrate as electron acceptor. Now, I don't know, just by this, if you're able to make out, nitrate is a form that is taken up by plants. Okay, in the soil, there are two forms in which plants can take up nitrogen, either as nitrate or as ammonia. Okay, and N2 is a form which is very inert. So this is actually a process which is leading to an available form of nitrogen. It is converting that form to an inert form of nitrogen. Okay. So it's removing the fixed nitrogen, thereby depleting the soil of nutrition. Now, the process has both positive and negative implications, converting it into N2. So denitrification in wastewater treatment, it is actually a process which is used to remove unwanted nitrates from the wastewater effluent. To increase its portability and also to reduce the chances of the treated wastewater being a favored system of what you see here. These are algal blooms जो तुमने देखा होगा water bodies में, and these result when there is a high level of nitrate or even phosphate. So basically high nutrient condition would result into such algal blooms. This of course it plays with the aesthetics, but it also adversely affects the ecosystem. So that is one positive application of denitrification. Wastewater treatment mein there is a particular step wherein denitrification takes place. But like I said, in agriculture, if you see, if the soil is not well aerated or there is waterlogging leading to the creation of an anaerobic zone, then denitrification leads to loss of nitrogen in the form of N2.
thereby, like I said, depleting the soil of nutrients. Hence, it is usually recommended, usually क्या है तुम लोग भी जानते होगे, that you plow the soils for aeration so that a situation of anaerobic condition is not attained. That is about denitrification. Now, methanogenesis भी तुमने सुना होगा. It is a biological production of methane by either using C1 compounds or depending on the two types of methanogens. Methanogenesis मतलब generation of methane. Okay. So either C1 compounds or even acetic acid can serve as a terminal electron acceptor. And methanogenesis is catalyzed exclusively by archaea. So this has a huge implication in the global carbon cycle, global warming, as you know. It is also the primary pathway that breaks down organic matter in landfills, where you know that there's a large volume of methane released. So in treatment of waste, this is a process which is very important. And of course, I'm sure you're also aware of the biofuels, that is biogas serving as an alternative to fossil fuels. तुम लोग denitrification और methanogenesis दोनों you're going to study in your advanced courses, biological wastewater treatment में you'll be studying this. So basically तुम लोगों ने अभी glycolysis and citric acid cycle cover किया with electron transport. In fact, I have time to actually take you through the other pathways also. Now, how many of you want me to do that? आधा ही, अभी तो 15-20 मिनट बचे हैं. विशंतन, गुड, ठीक है, perfect. हाँ, 3-4 हाथ काफी है. बस I'm really happy. Okay. तो so what you saw now was glycolysis में EMP pathway. और तुम लोग को अभी किसी को कोई डाउट है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? I'm going to talk about alternate pathways to EMP, pathways which are alternate to EMP. EMP was Embden-Meyerhof-Parnas pathway, ठीक है, और इसमें breakdown हो रहा था. Now I'm going to talk about two pathways which are alternatives to EMP. In fact, one of them is very unique. It's unique to prokaryotic systems, to bacterial systems. किसी को कोई doubt है? Difference between aerobic and anaerobic किसमें? मैम हाँ, EMP में GTP का और बाकी जो अदर फॉस्फेट्स हैं, तो मैम उनका रोल अच्छे से समझ नहीं आया, मतलब उनका रोल अच्छे से पता नहीं चला, लाइक मतलब एग्जैक्टली क्या होता, बस ऐसे ऊपर से थोड़ा सा आइडिया है. अच्छा, तो रुको एक मिनट, तुमको किस चीज का रोल नहीं पता? एटीपी जनरेट हो रहा है, इसका रोल तो पता करने की जरूरत ही नहीं है. एटीपी तो मैं पूरे प्रोसेस में हमने बस ये बताया कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अभी तक तुमने अगर देखा हो तो इन तीनों स्टेजेस में सिर्फ ईएमपी में हो रहा था, राइट सत्यका? मैम इंटरेक्शन क्या बोल रहा हूँ मैम, लाइक मतलब जैसे मतलब कहाँ पे जीटीपी इंटरेक्ट करता है और कहाँ पे चेन इनिशियलाइज होती है, वैसे करके मतलब जो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत. समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन, क्योंकि जीटीपी तो ईएमपी में था ही नहीं, कहाँ हाँ, से आया ये? मैम ईएमपी में नहीं था, बट वैसे मतलब इन सेंस की एरोबिक रेस्पिरेशन में होता तो है ही ना. हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन सब कुछ है एक्सेप्ट द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. हाँ मैम, तो बस वही कि एग्जैक्टली मतलब रोल किस जगह पे आता, किस चीज का? एटीपी का? जीटीपी का, जब बाकी मतलब ओके, अच्छा, तो इसकी भी सो जीटीपी अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखा है ना? अभी तक सिर्फ हमारे पूरे जो अभी हम लोग रेस्पिरेशन देख रहे थे इसमें जीटीपी का रोल सिर्फ यहाँ पे. इनफैक्ट अगर तुम लोगों ने आंसर्स देखा होगा तो तुम देखा होगा कि बाकी भी न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं, डीएनटीपीज एनटीपीज यूज होते हैं. तो एक हाइपोथेसिस है यहाँ पे, क्योंकि हमने एटीपी इसलिए लिखा था बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल्सो एनर्जी करेंसी. जीटीपी भी सिंथेसाइज हो रहा है तो वो ये कर रहा है. There is one hypothesis which says कि यहाँ पे GTP का use is because ATP has a much variable concentration in the cell. So having a more robust, or let's say something which has a more stable concentration like GTP helps the TCA cycle. Then it does not really depend on something as fluctuating as ATP. ठीक है, which makes sense. Okay. तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे हमने GTP देखा है अभी तक, जो कि डिटरमाइन जब when the process or the step glucose is determined to or committed to glycolysis, then you have this oxidation process and here GTP is used. Is that what you are asking, Satyakam?
यस मैम, है ना? काइंड ऑफ। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने कहीं और नहीं देखा, बट देन इवन हियर यू विल सी इन मेनी टेक्स्ट बुक्स दैट इंस्टेड ऑफ जीटीपी एटीपी इज मेंशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम काउंट करते हैं एनर्जी करेंसी तो सिर्फ इस तरह से एटीपी के टर्म्स में, ठीक है? तो बाकी हर जगह इट वाज ओनली सबस्ट्रेट लेवल से तुमने देखा कि बस ये फ्रैक्शन है सबस्ट्रेट लेवल का, ठीक है? बाकी सब कुछ उसमें भी एनएडीएच का कंपोनेंट हटाना होगा, सिर्फ ये जो कंपोनेंट है वो सबस्ट्रेट लेवल है, बाकी सब कुछ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ठीक है? ठीक है, तो ईएमपी में तुमने देखा 10 स्टेप्स थे, और देयर आर सर्टेन अदर alternates to catabolizing glucose which are found in bacteria, like the pentose phosphate pathway and the ED pathway. Okay, and ये जो pathway ED pathway, this is the one that I am saying is exclusively found in obligate aerobic bacteria, and ये बहुत biotechnological applications के लिए भी इसकी significance काफी ज्यादा है. Both these pathways have their own significance. Okay, so I'll take a PPP and ED pathways. Simple है, तुमको बस हम ये दिखा रहे हैं कि ये कैसे they are related. So this is the EMP pathway, the 10-step EMP pathway, and you will see these side chains which are the PP and the ED pathway. But इन सबका significance है और क्या ये extra benefit देते हैं सेल को, ये this we will talk about. अब तुम लोग को enzymes में तुम लोगों ने aldolase, ketolase सुना है क्या किसी ने? क्योंकि पीपीपी पाथवे में मुझे इसके बारे में बात करना है. एनीबडी? नहीं. ओके, तो इन द केस ऑफ पीपीपी ये देखो ईएमपी एंड पीपीपी प्रोसेस वही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. हाँ, लेकिन क्या डिफरेंस है ये देखो. हियर आल्सो देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, एंड विथ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इट हैपेंस विथ NADP प्लस इंस्टेड ऑफ NAD प्लस, because the NADPH that is generated, it is actually tagged for biosynthesis. NADH जो generate हो रहा था वो tagged होता है catabolic processes के लिए और biosynthetic processes के लिए. ये P tagging से it is actually reserved for biosynthesis. So formation of biosynthesis, this is a formation of NADPH is a means of tagging the reductive power for so और कैटाबॉलिज्म में यूज ना हो, इसलिए इस केस में NADPH जनरेट होगा. ये एक डिफरेंस है फ्रॉम EMP पाथवे. एंड there are several sugars in this process. There are several sugars which are generated which are important for biosynthesis of macromolecules. तो ये hence PPP is important because biosynthesis के लिए बहुत सारे monomers या starting materials precursors इससे generate होते हैं. Also precursors are generated for nucleotide and amino acid biosynthesis. So तुम समझ सकते हो कि PPP की importance यहाँ पे क्या है. एक तो reducing power for biosynthesis plus various precursors are generated as glucose breaks down in the glycolysis step. Okay. Now having said that, before we actually talk about the process, I have to mention to you these two enzymes which play a very critical role in this in the PPP. One is a trans-aldolase and the other one is trans-ketolase. Okay, and in this process of PPP, you will see these two enzymes alternating. Okay, so trans-aldolase is basically transfer of a 3-carbon moiety. तो यहाँ पे अगर तुम देखो, this is a 7-carbon phosphorylated keto sugar. यहाँ पे 3 carbon are transferred to another moiety, making this a 6-carbon sugar. तो rearrangements है, यहाँ से ये 3 carbon to so this is a 3-carbon transfer. However, ketolase mediates a 2-carbon transfer. अगर तुम यहाँ देखो तो ये this moiety is transferred to फलाना this. Okay, तो यही डिफरेंस है. ट्रांस aldolase 3-carbon transfer, trans ketolase 2-carbon transfer. Now PPP can be divided into 2 phases. There is an oxidative phase and a non-oxidative phase. The oxidative phase involves the generation of NADPH, जो भी हम कह रहे थे, it is responsible for or it is needed for biosynthesis. And in the oxidative phase, by decarboxylation, एक 6 कार्बन से शुरू कर रहे हैं हम लोग. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर तुम्हें याद हो EMP में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था फॉर ट्रैपिंग द ग्लूकोज.
So in this case, what happens is decarboxylation takes place and dehydrogenation takes place. NADPH is generated and the 6-carbon glucose 6-phosphate is converted to ribulose 5-phosphate which is a 5-carbon sugar. ठीक है, और ये राइबोस 5-phosphate आइसोमराइज करके फॉर्म कर सकता है, जो अभी हम आपको मेंशन कर रहे थे कि यू हैव प्रिकर्सर्स फॉर न्यूक्लियोटाइड्स that are synthesized. Right here you can see that there is a 5-carbon compound और आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में हमें ये चाहिए. This is one of the component of nucleotides. So whether it is not just nucleotides, RNA, DNA, but also ATP, NADH, FAD, they all require this. तो ये है oxidative phase जहाँ पे कि you see there are 2 dehydrogenases and then release of 1 CO2. So 6 carbon से 5 carbon हो गया है in the oxidative phase. अब coming to the non-oxidative phase, और ये तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ऑक्सीडेटिव फेज से ग्लूकोज 6-phosphate से राइबोज 5-phosphate बन चुका है. आपको पता है राइबोज इज जस्ट एन आइसोमर ऑफ राइबुलोज 5-phosphate. तो राइबोज 5-phosphate which is a 5-carbon aldehyde can form xylulose 5-phosphate, another this is a keto, as you know this is a, तुम लोग को suffix से पता होगा कि ये कीटोज है. Now what happens is a series of rearrangements जिससे बहुत सारे sugars बनते हैं. मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे several sugars are formed which are important for forming macromolecule. तो several rearrangement reactions take place. अब तुमको मैंने कहा था ketolase मतलब 2-carbon transfer. A 5-carbon aldehyde and a 5-carbon ketone together rearrange to form a 7-carbon moiety sugar pseudoheptulose, जो तुमने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा. In fact, this is a rearrangement which, in fact, this is one of the steps wherein you have a 7-carbon sugar, one of the pathways wherein you have 7-carbon sugar being formed, and a glyceraldehyde 3-phosphate. ये clear है reaction? 5-carbon 5-carbon है, rearrangement हो रहा है, 2 carbon move to the other moiety and you have glyceraldehyde 7+3. Carbons हमेशा fixed रहेंगे, हाँ, 5+5 7+3. Now pseudoheptulose by the enzyme transaldolase can transfer 3 carbons to glyceraldehyde to form. So अगर इसमें ये 7 है और इसमें से अगर transaldolase है मतलब oh god 2 carbon transfer हो रहा है, मतलब it will result into a fructose 6-phosphate and you will have an erythrose 4-phosphate which is a 4-carbon. So 4 + 5 9, यहाँ पे 7 + 3 10th. ओ क्या हम बोल रहे हैं, 6 + 4 है ये, right? So 7 and 3 rearrange to form a 6 and a 4. क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट हो रहा है कीटोलेज एल्डोलेज के फंक्शन में तो प्लीज अभी पूछो. बस रीअरेंजमेंट्स है, पहले 2 carbon transfer, 3 carbon transfer, and then this erythrose 4-phosphate which uses another 5-carbon compound that is xylulose. और हमेशा एक aldehyde और ketone है. These are all aldol condensations. तो हमेशा एक aldehyde and ketone है, generates another aldehyde and ketone, a different form of the sugar. So this 4-carbon and this 5-carbon, by the help of a transketolase, they form another fructose 6-phosphate and a glyceraldehyde 3-phosphate. और होगा क्या कि this glyceraldehyde 3-phosphate तुम्हें याद है और fructose 6-phosphate तुम्हें याद है, these all enter into the EMP pathway. fructose 6-phosphate भी enter कर सकता है, glyceraldehyde 3-phosphate भी enter कर सकता है, ये पता है आप लोग को. So coming back to where it is connected. Now transaldolase transketolase reaction से या तो fructose 6-phosphate बन रहा है या glyceraldehyde 3-phosphate बन रहा है, जो कि वापस EMP के चेन में जा रहा है and you have ATP synthesized. Is that clear students? यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे कि 6 carbon to 5 carbon and then you have these rearrangements. Basically rearrangements का पर्पस है कि हमें ये different kinds of sugars मिल रहे हैं synthesis के लिए. And then what is regenerated is either fructose 6-phosphate which enters into the EMP or glyceraldehyde 3-phosphate which enters into the EMP pathway. लेकिन difference क्या है? So how is this different? ये हमने फिर से rearrangement for all those who would like to see the structures and कौन सा carbon transfer हो रहा है. This is just the 3 reactions I've mentioned, the ketolase, aldolase and ketolase alternating.
and how these different sugars are formed. Glyceraldehyde, अच्छा नहीं, हम तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि इंटरैक्ट कैसे कर रहा है ये? यहाँ पे मैंने तुम लोग को सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ इट इंटरैक्ट। सो बेसिकली द लाइक द अर्लियर फिगर वेयरइन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर फॉर्म्ड। अब तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे एटीपी यील्ड ईएमपी से ज्यादा है या फिर कम है या इक्वल है? कोई मुझे बता सकता है फ्रॉम व्हाट आई हैव जस्ट इन्फॉर्म टू यू? समझ में आया ये पीपीपी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? स्टूडेंट्स कहाँ हो, प्लीज बताओ। I'll not go to the ED pathway, I'll just stop here. तुम लोग कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछो। दीपक जहांगीर, could you get what we are talking about? मैम मुझे I get every individual term, but in whole picture is not clear. Like what is अच्छा, all whole picture of what? Glycolysis या PPP? PP? PPP, okay. Anybody else? Anybody who would like to answer to Deepak कि हो क्या रहा है इसमें ultimately? And also what is the difference in energy yield? तो EMP समझ में सबको आया था, ग्लूकोज से कैसे ट्रैप हो रहा था, कैसे ब्रेक डाउन हो रहा था into 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि the PPP which is actually also a feeder for EMP, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट actually forms sugars। तो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एक 5 कार्बन शुगर फॉर्म हो रहा है, और वो 5 कार्बन शुगर क्यों चाहिए सेल को आपको पता है, बायोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए, राइट? ऑल न्यूक्लियोटाइड्स वुड हैव 5 कार्बन शुगर्स। Hence this process is important because it is leading to precursors which are required by the cell, and it is returning back glyceraldehyde 3 phosphate or fructose 6 phosphate so that the EMP can run for ATP generation. Is that clear? और ये जो regenerations या rearrangements, हाँ आशी पूछो। Ma'am, it's clear. It's clear, good. एंड इसका नाम पेंटोज फॉस्फेट क्यों है ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ पे इतने सारे पेंटोज शुगर्स फॉर्म हो रहे हैं, और इनफैक्ट ऑक्सीडेटिव फेज में पेंटोज शुगर ही आगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जा रहा है। सो आई एम ग्लैड कि इट इज क्लियर द पर्पस ऑल्सो, दिस इज द सिग्निफिकेंस जो मैंने सबसे पहले इसलिए मेंशन कर दिया था। एंड डोंट फॉरगेट दैट पीपीपी इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर कंसीडरिंग नाउ विच जनरेट्स NADPH। तो इसलिए भी पीपीपी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिड्यूसिंग पावर जो बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो यहाँ जनरेट हो रहा है। मैम Okay. फ्रैक्शन ऑफ एटीपी थोड़े ना जनरेट होगा कभी? फ्रैक्शन ऑफ एटीपी मतलब एटीपी तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही होगी ना? हाँ, मैंने तो नहीं बोला कि फ्रैक्शन, मैंने बोला तो था कि फ्रैक्शन ऑफ एटीपी। नहीं तो मैम फिर हाँ। इसमें यील्ड 1 होना चाहिए एग्जैक्टली यही हम तब से पूछ रहे हैं कि मुझे मैम, बताओ क्योंकि कि मैम हाँ बिकॉज ईएमपी मैम हम वही पढ़ेंगे ना, मतलब जिसमें ज्यादा यील्ड होगा पहले, तो ईएमपी में 2 होती है तो इसमें मतलब एक ही होगी है ना, क्योंकि एक तो चला गया रीअरेंजमेंट हाउस के लिए, है ना? यही हम तुम लोग से पूछ रहे थे कि क्या दोनों में इक्विटेबल। तो मुझे ये बताओ कि एटीपी यील्ड दोनों में कितनी है, हम इसीलिए ये पूछ रहे थे कि पीपीपी में ज्यादा है या फिर एटीपी ईएमपी पाथवे में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ NADPH तुम्हें देखना है कि ATP यील्ड अगर कम भी है तो यहाँ पे NADPH जनरेट हो रहा है और सेल के पास बाकी चीजें जनरेट हो रही हैं, प्रिकर्सर मेटाबोलाइट्स। ओके, तो हम इसीलिए कह, इनफैक्ट आई थॉट आई कि तुम लोग देख के आओ कि इसमें ATP अल्टीमेटली कितना ATP जनरेट हो रहा है PPP में, या विच वन इज द मोर बेनिफिशियल स्टेप फॉर द सेल टू हैव। लेकिन इफ यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, जो अब पता नहीं दीपक को समझ में आया है कि नहीं, कि ओवरऑल पिक्चर ये है कि पीपीपी में बहुत सारी और चीजें जनरेट हो रही हैं जो कि बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए। दीपक समझ में आ रहा है अब? यस मैम, आ गया समझ में। अब समझ में आया ना कि इसमें ये क्यों हो रहा है यहाँ पे। हाँ, और ईडी का भी अपना सिग्निफिकेंस है, बट ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे ईडी पाथवे। ठीक है, एंड दैट विल ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, okay, so if there are no other questions students, then we can wrap up. We'll meet on Thursday now. Thank you, ma'am. Thank you, bye bye. मैम एक डाउट था हाँ लास्ट। पूछो, बोलो। मैम वो एटीपी जनरेशन टोटल वो फिगर से ही देखा ना हम लोग ने? वो फिगर मुझे दिखाना है क्या? एक मिनट रुकना, हमने बंद कर दिया। गिव मी अ मिनट देन। You want to come to the ओवरऑल दैट ईएमपी फिगर ऑल to the EMP figure? Okay.